Good morning and hello students. Welcome back to Simplified Maths. दोस्तों चैप्टर 7 indefinite integration is going on. The topic indefinite integration. Today in this particular lecture we are going to begin the next theory part, which is very important. In fact, it is known as integration by parts. Okay, this is very important. Okay friends, in the last lecture we have completed exercise 7.5. Okay, 7.5 हमने complete किया था. Now this is a method of integration by parts. Why this is important? Friends, in the differentiation, in the derivative, you know chain rule, then a product rule and a division rule. You know how important they are, right? Especially chain rule. Okay, and just like that, in integration, this method of integration by parts is extremely important. Okay, अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक अगर है देन इट इज़ दिस integration by parts. This is okay. In the earlier textbook, that is our state board syllabus, this topic integration by parts was given as a theorem, and there was a statement, such a big statement. You see my size, this much lengthy statement it was, and then proof. Okay, and we used to ask it in the exam that derive means first you have to write down the full sentence and then you have to derive it, means proof, like that. So it was integration by part. And one more thing, that change a variable method, that is what method it was? We call it a substitution method, right? Both were very important theory part. But now we are supposed to learn it. What is the formula? Now see, I'm not going in the derivation of the formula. You just remember the formula is integration of, this is the formula you have to remember, integration of fx gx dx. So what do you see? It is something like a product rule, isn't it? fx into gx, जैसे वो d by dx करते थे हम, fx gx, तो क्या करते थे? fx as it is into g dash x plus gx as it is into f dash x. But here it's something totally different. See what the formula is. Integration fx dx is equal to, the first step looks like that it is fx as it is into integration of gx dx. Okay, minus, then it's not plus but it is minus, and then minus integration of, then I put a bracket, ध्यान से देखना, minus integration of f dash x into integration, again integration of gx dx. Okay friends, so this is the formula. You may feel that it's very complicated, isn't it? Especially the second term, है ना? In the second term में क्या है? Integration, then the big bracket, means what you have to do is, first you have to take inside the brackets simplification, means first you have to take f dash x, then integration of gx dx भी करना पड़ेगा. वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे किया होगा, isn't it? When we do the sums today itself, you will see that this integration will be done here. The same we have to copy here, and then there is a bracket. Okay, and one more thing is left still, actually, whole dx. What do you mean by whole dx? The whole dx means
ये पूरे ब्रैकेट का dx मतलब इंटीग्रेशन अभी बाकी है, तो पहले अंदर का सिंप्लीफिकेशन हो जाए, बाद में इंटीग्रेशन अगेन. ओके, क्लियर इट इज. बट now the same can be write in another notation which is may not be given in the textbook. Okay, so I am just writing it for you people, just remember it better. Instead of fx and gx आप ऐसे याद करो उसको, just say it is uv dx. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx मतलब fx के बदले u लिख दो, gx के बदले v लिख दो. You know that in the derivation also we have product rule is d by dx of uv, करते हो ना. So same way here also integration of uv dx is equal to, now see fx means u, integration of gx dx means integration of v dx minus integration of f dash x. f dash x fx के बदले हमने u लिखा हुआ है, so what will be f dash x? f dash x will be du by dx. Hope you understand this. Okay, and into integration of gx dx, तो उसको क्या लिखेंगे, v dx ब्रैकेट ओवर होल dx. Okay, right? So my habit is to remember this. मैं ये नहीं याद रखता हूँ, मैं uv में याद रखता हूँ, वो easy रहता है. whenever you want to use it, it will be more easier to apply. What is it? फिर से बोलेंगे एक बार, integration of uv dx equal to u as it is, integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx whole dx. ठीक है, मतलब पहले ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर का सिंप्लीफाई करने के बाद बाहर का इंटीग्रेशन करना होगा. ओके, ये आप ध्यान में रखोगे. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ बिफोर वी बिगिन द सम्स इन दिस, there is very important note we have to look at how to select u and v whenever you are given the sum. Suppose I am given the sum gets x into sin x. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 में वो आएगा, आप देखना. तो x into sin x है, then how will I come to know that I put u is equal to x and v is equal to sin x? If the selection is wrong, अगर आपने u v सिलेक्ट करने में उल्टा कर दिया, अगर जिसको u लेना है, अगर बाय मिस्टेक इफ यू टेक v एंड जिसको v लेना है, इफ यू टेक बाय मिस्टेक u, देन यू विल नॉट गेट आंसर. ओके, आंसर नहीं मिलेगा, सब पक्की बात है. सो याद रखो, ऐसे कोई भी ऑर्डर में u v सिलेक्ट नहीं करेंगे. हाउ विल यू सिलेक्ट u एंड v? जस्ट सी, to select u and v, we have take two observation. Let me say observation there, it is not rule. There is no way, कहीं भी टेक्स्ट बुक में कहीं पे एज ए रूल नहीं दिया होगा, ठीक है, बट इट इज ऑब्जर्वेशन ओनली, एंड यूजिंग दैट ऑब्जर्वेशन, and that observation means there may be exception. All the time that rule, it's not rule, but it's observation. So there may be exception there. Sometimes you have to think little bit out of the box. But before I go for the sums and what observation is, the first note means the first observation is when you want to select u and v, okay, to select u and v, first of all, always select v whose integration is known. ये सबसे पहली बात है, whose integration is known. Why this observation is made, students? Because if you look at the formula again, integration v dx, can you see? Integration v dx. Okay, so now see,
first always select V whose integration is known, obviously. Otherwise, अगर आपने कोई V ऐसा select कर दिया, you have selected V in such a way that you cannot integrate only, then how can you go further? Means your selection is wrong. So select V whose integration is known. That's the first thing. But only this observation is not sufficient, students, because जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया x into sin x, then you know integration of x is also known, integration of sin x is also known. So again confusion, because according to this observation तो u v में v तो कोई भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, sin x भी ले सकते हो. Now what? So there is a second observation, and now this second observation is very important. Okay, this is very important. Just remember it, that we select u. just देखना ध्यान से हो, we select the function u. जो भी फंक्शन u लेना है ना, function as u in the following decreasing order. I arrow down में करता हूँ, that means decreasing order. And what that decreasing order is, अब ध्यान से देखना. Okay, see the decreasing order is like this: L I A T E. सो इसको आप स्पेलिंग के हिसाब से क्या बोलोगे? इट्स स्पेलिंग क्या होगा इसका? लिएट. स्पेलिंग क्या होगा? फॉलोइंग ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर इज व्हाट? इट्स अ लिएट ऑर्डर. LIATE. ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है. और व्हाट आई हैव रिटन इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. नाउ व्हाट L स्टैंड्स फॉर, फ्रेंड्स? L means logarithmic function. L means what? Log, or say logarithmic function. It is always a first priority to choose U. Okay, friends? Then I means inverse. Okay, inverse trigonometric functions. It's a second choice. ठीक है. Then A means it is algebraic or arithmetic functions से, arithmetic और algebraic. Okay, algebraic भी बोल सकते हो. ठीक है, और you can say, let me say arithmetic. arithmetic functions में क्या आएगा? Just for example मैं लिखता हूँ, in that all the polynomials means like x square, root x, or any x raised to 1/3, anything, whatever power, this is all called arithmetic or polynomial function. That is all belongs to A. Okay, then T means simple trigonometric function. That means sin, cos, tan, cot. यहाँ पे इनवर्स है. इनवर्स मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, वो सब. ठीक है, दैट इज ऑल इनवर्स. राइट. लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या, किस टाइप के आएंगे? कोई भी लॉग वाला, log x या तो log 2x भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक दिस. एंड द लास्ट प्रायोरिटी is given to exponential function. What? Last priority is exponential function. Okay, exponential function means it will be like, say, 2 raised to x, e raised to x, ऐसे सब. ठीक है, e raised to 3x, 2 raised to anything 3x or 4x, like this. These are all exponential. Okay, friends, right? So this is the decreasing order priority to choose U. ठीक है.
इसका मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम में लॉग वाली टर्म है, लॉग वाली कोई भी टर्म, देन इट्स अ फर्स्ट चॉइस टू सिलेक्ट एज यू, मतलब लॉग को यू लेना ही पड़ेगा. रिमेंबर वन थिंग, करेक्ट? ओके. देन सेकंड प्रायोरिटी will be given to inverse trigonometric function to select u, then arithmetic or algebraic function, then trigonometric, and the last choice is exponential function. Okay. From this observation, again, my one more observation I am not going to write, I am just speaking it, listen it properly. Exponential function can never be u. समझे क्या बोला मैं? We can never select or choose exponential function as u. Never. You know why? Because जब भी आपको सम दिया होगा, if you look in the 7.6 exercise in the textbook, all of you open the textbook, page number 327. Okay, page number 327. And look at sum number 3. Look at sum number 3. What is sum number 3? X square e raised to 3x. Hope you are all keeping your textbook with you when the lecture is on. Okay. So x square e raised to x, उसमें x square क्या हो गया? Algebraic में आ गया. And e raised to x what? Exponential हो गया. Isn't it? Okay friends, right? So clearly e raised to x you cannot select as u, but you have to select x square as u. मतलब e raised to x के साथ whatever the function is given is always in the top priority. E raised to x is the last priority to select u. That means we cannot select exponential function as u. Remember this thing, हाँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब भले हमने लिएट स्पेलिंग लिखा, बट उसमें से for selecting u, you have only 4 choices. How many? 4. L, I, A, T. That's all. Exponential function is not a choice in fact. L, I, A, T. Only 4 choices there to select u. And we you have to select in such a way that whose integration is known. So these are the two observations I have written on the previous page. Remember students, it's an observation, they are not rules. So there are sums in which there is an exception. ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका use होगा ही होगा. Okay, but in our textbook mostly it is there. Mostly means it is there. Okay, but there are sums, maybe if I find I will let you know. मैं देखूंगा पुरानी कोई textbook में से मिले तो, then you will see that selecting u and v is something different other than the rules or observations we have written just now. Okay friends, now exercise 7.6 I am beginning today friends, and first 9 sums, up to 9 sums, all are with the same method. Just select uv and go on. Okay, so we'll take at least 2 or 3 उसमें से कर लोगे तो बाकी सब अपने आप आपको आ जाएंगे. Suppose I take sum number 2. First and second are all same. Now see, look at the sum. It is x sine 3x. X sine 3x dx. Correct? Right. Because it's the first sum, I am just writing what is u and what is v. Otherwise you can directly use the rule. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हो. बट नाउ यू नो x is a algebraic function, this is trigonometric, so recall LIAT, L-I-A-T, A-T. So this will be u and this will be v, uv. So it is in the order. कभी कभी ऐसा होगा कि it will be given in the reverse order. So don't get confused. First you change the order. Okay, so that you don't by mistake also you don't use the integration by parts by selecting the first term as u and second as v. First term u, but it is always in that order of LIAT. Be careful. Okay, right. Now according to rule, u as it is means x as it is,
integration of sin 3x means v dx, sin 3x dx minus integration of, फिर बड़ा bracket, then du by dx. Because it's a first sum, I am writing all steps. So du by dx means d by dx of x into integration of v dx. So integration of v dx means sin 3x dx bracket over whole dx. Okay, right. So is equal to, now you know the formula, sin 3x का क्या होगा, minus cos 3x and upon 3 because coefficient of x is 3, right? So it will be minus x cos 3x माइनस आगे ले लिया मैंने अपॉन 3, ठीक है, राइट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, बट फर्स्ट लेट मी फिनिश द सम. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ठीक है. नाउ रिमेंबर मैंने बोला था फर्स्ट आउटसाइड इंटीग्रेशन वी विल नॉट डू, फर्स्ट यू सिंप्लीफाइड द इनसाइड टर्म्स और जो बचेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, राइट. सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज सिंपली 1 and sin 3x will be minus cos 3x by 3 and the bracket over whole dx. Okay friends, right. Now the first term तो हो गई है x cos 3x upon 3. Now minus minus plus और 3 भी outside ले लो. So plus 1 upon 3 into, अभी इंटीग्रेशन ऑफ, अभी बाहर का इंटीग्रेशन इज स्टिल लेफ्ट एंड द व्हाट इज द इनसाइड टर्म, लिमिट cos 3x dx. सो नाउ cos 3x का इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. ओके, सो फाइनली यू गेट द आंसर cos 3x by 3. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin बट अगेन अपॉन 3, सो 1 अपॉन 9 हो जाएगा, 1 अपॉन 9. सो इट विल बी sin 3x upon 9 plus c. Okay, so this is the final answer friends. Okay दोस्तों, right. So ये वाला जो मैंने सम किया ना, by the same way up to 9 sum, even 10 भी हो सकता है, but till 9 there is no new method. यही करना है, हाँ, isn't it? Okay. Now one more point I want to discuss here is, whenever you take the integration, it's an indefinite integration, so plus c आता है, isn't it? Plus c will be there. So in fact यहाँ पे हमने integration किया तो there should be plus c, and again this integration is there, so again you get plus c. So here I have not taken plus c. Can you observe this? The reason is, even if you take, it is in one of the theory part they have explained this. Taking the sum on the page number 324, 325, if you see of textbook, they have explained, then even if you take यहाँ पे constant लेंगे ना, if you take constant here as well as constant here, finally the answer will not alter because वो दोनों constant का addition होके finally plus से लिखना पड़ता है. जो भी है ना, यहाँ पे suppose C1 ले लो, यहाँ पे C2 ले लो, C1 plus C2 या C1 minus C2 का finally C लिखना पड़ेगा. So ultimately it's same. So therefore here I have not taken plus c. So अगर किसी को कोई डाउट हुआ है कि सर आपने कांस्टेंट यहाँ पे क्यों नहीं लिया, that is the reason and that is explained in the textbook as well. Okay friends, now I'll take one more sum. Just see, one more sum we'll try. Okay, suppose you take sixth sum, fifth, sixth, fourth, fifth, sixth, everything is in logarithm. So logarithm is a top priority, isn't it? Okay. तो सपोज आई टेक सिक्स्थ सम, तो सिक्स्थ सम में देखो क्या होगा, सब सिमिलर है इसलिए मैं रैंडमली ले रहा हूँ. इट इज एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स. सो नाउ यू नो एक्स स्क्वेयर इज एल्जेब्रिक, सो इट विल बी यू, सॉरी इट विल बी वी, एंड लॉग एक्स इज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी, सो यू, इजंट इट? ठीक है ना, राइट. नाउ सी व्हाट हैपेंस, log x को u लिया, इसको भी लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई शुड डू, चेंज द टर्म, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है. तो आई टेक log x
इंटू एक्स स्क्वेयर। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी ये सिलेक्शन तो राइट हो जाता है, बट वी जस्ट लुक एट द ऑर्डर एंड देन अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड वी गेट द स्टक इन द सम, आंसर ही नहीं आएगा। सो नाउ दिस इज u एंड दिस इज v। सो फॉर्मूला अप्लाई करो। सो यू नो u as it is means log x as it is integration of x square dx minus integration of d by dx of log x, मतलब du by dx, d by dx of log x into integration of v dx, integration of v dx means x square dx, bracket over whole dx। Hope you now remember the integration by part formula and just मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, you will get it। Now apply the formula। So it will be log x into x cube by 3 and minus integration of the ब्रैकेट में इसका log x का d by dx 1 upon x into x cube by 3 bracket over whole dx। So here you can see that x get cancelled out, so x square remain and 3 out, and then you will take outside integration। So ये वाला term as it is, okay। So is equal to x cube log x by 3, that is the first term। Then what is remaining there, first of all let me write down minus integration of, यहाँ पे बार 1/3 लिख दो, and x square dx because 1 of x get cancelled out, ठीक है ना, okay। So is equal to, now first term as it is x cube log x by 3 and now this will be again x cube by 3, so again it will be by 9, so x cube by 9 and finally I put plus c, answer। Okay friends, hope you understand these things, right? So कहाँ तक आप ऐसे कर सकते हो, you can do it up to sum number 9। वैसे तो सारे कर सकते हो बट 9 तक तो सब सिमिलर ही है, ठीक है। अब जैसे आप देखो कोई भी सम ले लो, इफ़ यू टेक 7 सम, then the 7th sum what is given to us, because there is a space I am just giving you the hint and beginning, then you can finish it up, x sine inverse x। Now you know this is inverse trigonometry, so I, so remember Liat spelling Liate, Liate। so ये इन्वर्स आ गया तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, दिस विल बी आवर u, है ना, एंड a दिस विल बी आवर v, करेक्ट। सो पहले तो उसको ऑर्डर चेंज करके लिख दो u v को, सो इट विल बी साइन इनवर्स x इंटू एक्स, ठीक है, एंड देन अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो u v u एज इट इज साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx minus integration of bracket then d by dx of sine inverse x, d by dx of sine inverse x into integration of x dx bracket over whole dx। यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि दोनों कॉपी पेस्ट होते हैं, मतलब सिमिलर हो, जो यहाँ पे करो वही यहाँ पे करना है ना, बिकॉज इन द फॉर्मूला इट इज लाइक दैट। सो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, नाउ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल ऑफ यू आर नाउ नोइंग दिस फॉर्मूला, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx, ये वाला ब्रैकेट है, बट नाउ नो नीड टू ब्रैकेट बिकॉज इट्स ऑलरेडी simplified। So now this first term as it is means x square sin inverse x by 2 as it is, ये 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब what left here is x square upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा dx, ठीक है, राइट। नाउ
व्हाट यू शैल डू हियर, आप यहाँ पे क्या करोगे वो थोड़ा ध्यान में रखो. देर आर टू वेज. द टू वे इज, एक तो ऊपर वन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हो, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन. बट इफ यू डू दैट देन देर इज गोइंग टू बी वन मोर फॉर्मूला विच इज इन फैक्ट स्टिल वी हैव नॉट लर्न. वो फॉर्मूला अभी 7.6 के बाद आती है. ओके, सो दैट फॉर्मूला इज नॉट डन येट. ओके, सो इसीलिए अभी हम वो मेथड नहीं, मतलब कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम है तो नो इश्यू, यू कैन डू इट, राइट. एंड अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज, आई थिंक दैट्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक 7.3 में जो आपने किया होगा. ठीक है, तो इन द सेकंड टर्म यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा ले लो. ठीक है, x इक्वल टू साइन थीटा. सो रिमेनिंग थिंग आई एम कीपिंग फॉर यू स्टूडेंट्स, just in this term only, let x is equal to sin theta, trigonometric substitution. Okay, or you know dx is equal to cos theta d theta हो जाएगा. And then for this particular term only you have to take the substitution and simplify, and then you put that simplified answer over here. So remember आप क्या करोगे कि इसको नंबर दे दो, ये वाले को नंबर 1 दे दो, और फिर ऐसे लिखो कि भाई इन 1 सेकंड टर्म, इन 1 इन सेकंड टर्म, ऐसे कुछ लिख दो, सेकंड टर्म और सेकंड इंटीग्रैंड. ठीक है, टेक दिस and then you just finish it and put it in 1. Okay, so remaining part hope you can do it in the homework, hopefully. Got this, friends? So you can do in homework up to 9 sum you can do. Finish up to sum number 1 to 9. वैसे आगे भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट 1 to 9 तो आप इजीली कर सकते हो इन होमवर्क. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आगे जाएंगे इससे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.